my presentation. My presentation is little bit. I will not be talking on the conventional sulfonylureas. I'll be talking about the combination therapy, what now the latest trend is, because sulfonylureas, we are using sulfonylureas since last 40 years with lot many complications. I was just talking to Rajesh Patel also. My view is little bit not my personal view, but the things they are not changing. Means we are practicing cardiology and diabetes since last 40 years. 40 साल पहले हम लोग जो यूज़ करते थे drugs, now we are not using. We were using sulfonylureas from the day, means 1985, 86 onwards. But because of the complications of the conventional drugs, sulfonylurea, metformin, weight gain is a very big issue. Weight gain is a very big issue, and the cardiac safety is not there with sulfonylurea. That is the biggest problem. So, in some slides, I'll be talking on the combination therapy. I just refresh my memories of all. The diabetes basically is not a carbohydrate metabolic disorder. It is basically a disorder involving the carbohydrate, protein and fat all. With chronic hyperglycemia, with glycosuria, with macro and microvascular complications. Macrovascular complication means CAD, CAV and peripheral vascular diseases. Micro means retinopathy, neuropathy and nephropathy. These parameters, they are the same from the day one. Blood sugar 65 to 110 is normal, fasting. If your blood glucose is more than 126 fasting, it means the patient is having diabetes. And if the prandial or random blood glucose is more than 140, means the patient is diabetic. I'll directly come to the pharmacological management of diabetes. Although Piyush has already covered very good coverage of the conventional medications what we are using in diabetic patient, but I'll be talking on the combination therapy. There are different class of medications they are available in the market. 10-12 तरह की दवाइयाँ हैं which we are using in diabetic patient. Means market is flooded with the anti-diabetic medications. Begonite heading the means it is on the top. Metformin is still one of the class 1A indication in diabetic management. Nobody can change the metformin uses of metformin in diabetic patients. So begonites, then sulfonylureas and glenites means epaglenites, acarbose, glitazones. I'll be talking mainly on the DPP4, SGLT2 and GLP1. These are the latest molecules, latest in trends, having all beneficial effects, because our main interest is not to control diabetes. Our main interest is not to control only diabetes. Our interest is to have all other parameters to be under control, like control of blood pressure, control of weight, control of lipid profiles, reduces the risk of cardiovascular episodes, reduce the risk of myocardial infarction, reduce the risk of strokes. These all can be possible not with conventional medication. They are if we are using these combinations like DPP4, SGLT2, GLP1, these are the wonderful molecules in the market with a very economical price nowadays, and they are very freely available in Sagar also. This is already covered by Dr. Piyush. After lifestyle modification, metformin is the drug of choice, followed by other medication. I will not go into this. Some drugs which are acting on pancreas means the drugs which stimulate beta cells. They are sulfonyl and pregabalins. Main drawback is higher risk of hypoglycemia with weight gain and CV risk. CV risk is very important, which is to be just keep in mind. And so we are using insulin sensitizers. Why we are using insulin sensitizer? Because in case of type 2 diabetes, insulin production is not a problem. Problem is basically in the beta cell dysfunction. Problem is basically in the insulin resistance. Problem is basically in the proper utilization of the insulin. Means the
blood glucose is not being properly utilized by the peripheral tissue like muscles and adipose tissue. So we have to give the drug not to stimulate pancreas, because the beta cells is already exhausted when you diagnose diabetes mellitus. Beta cells is already exhausted. So you don't want to stimulate exhausted beta cells. You want to, because sometimes when you see the check serum insulins, sometimes you find hyperinsulinemia. So because of the hyperinsulinemia, you don't want to give the drug which is stimulating pancreas to stimulate production of insulin. You have to give the medication which properly utilize insulins. So we have to give the insulin sensitizers in case of type 2 diabetes. These are the metformin, and the newer one is emiclamin. It is also available, and of course glitazones. But glitazone should be used with caution in case of cardiac episodes. Coming to the combination therapy, which is the main topic. This is basically my main topic to be discussed today. Combinations of metformin. Metformin, I already told you, it is on the top. There is no drug combination which is without metformin. You have to give metformin as a first line. Other combinations are combination of metformin with DPP-4, like sitagliptin, vildagliptin or linagliptin, and combination of metformin with DPP-4 and SGLT2. SGLT2, two things they are available, dapagliflozin and empagliflozin. Cana is out of the market now, but Dapa and Lina and the Dapa and Empa is already there in the market. Just to refresh your memories, why you are combining these medications. So we have to just refresh what is the mode of action. When we see the different mode of action, then will come why we are combining these medications. Metformin, which I have already told you, first line therapy, it is a very good insulin sensitizer. It increases the peripheral utilization of glucose in the muscles and adipose tissue. At the same time, it blocks the production of glucose at the level of liver by blocking hepatic gluconeogenesis. Okay, so it is a molecule which blocks the production of glucose from the liver. At the same time, it improves glucose utilization at the level of muscles and adipose tissue. And second one is incretin based therapy. Incretin means these are the molecule. जब हम लोग खाना खाते हैं, when we are taking carbohydrate rich food, these incretin hormones, they are released from the intestine, GLP-1 and GIP. These are the incretin hormones. These incretin hormones, they basically secreted in response to food, and these incretin hormones, they are being degraded by DPP-4 enzymes. So when we are giving DPP-4 inhibitors, we are blocking these DPP-4 enzymes. So we are, and indirectly you are increasing the GLP level, physiological rise of GLP level. And these GLP, increases the insulin secretions from the beta cells, as well as inhibit the glucagon production, and they slow down the gastric emptying. So DPP-4 inhibitors, they are wonderful molecules, and they are weight neutral. There is no weight gain in DPP-4. There is no evidence of hypoglycemia, even if you are giving these DPP-4 and stress diabetic, blood sugar 150, 180, and you are giving combinations of DPP-4 plus metformin. The patient will not develop hypoglycemia. In spite, even in the normal glycemic patient, you are giving sometimes DPP-4, you don't find the patient is developing hypoglycemia. And so there's, because these DPP-4, they are increasing the GLP level, so they prevent beta cell apoptosis. So less chances of beta cell failure. It's a better safety profile with DPP-4. These are the molecules you are already using: sitagliptin, vildagliptin, linagliptin. Lina we are preferring in case when the patient is having any renal involvement. Routinely we can use sitagliptin, vildagliptin, but if the patient serum creatinine level is high, then
prefer to, but it is better to start linagliptin, and saxagliptin and enagliptin, they are not there, but trelagliptin is there in the market. One trela के नाम से है. It is once in a week. Exenatide I will not talk to, but these are the molecules, because exenatide is not available. Semaglutide is gaining a lot of importance. Once in a week therapy, you are controlling your blood glucose, you are taking care of your weight, and it is a wonderful molecule. If you are giving these GLP-1 analogs, so once in a week, starting from 0.25 milligram once in a week, increasing to 0.5, then 1.7, then 2.4. You are controlling blood glucose, at the same time you are controlling the weight also. Sema and liraglutide. Liraglutide is also available by the name of Trulicity. It is also once in a week. They increases the insulin secretions, and they suppresses the glucagon secretion, and they slow down the gastric emptying. The action is the same. GLP-1 and GLP-1 analogs and DPP-4 inhibitors, action is the same. Why? DPP-4, because they are of the same group. DPP-4 inhibitors, they are basically blocking the DPP-4 enzyme, so there is a physiological rise of the GLP-1. Means the GLP-1 or GIP secretions, which are endogenous secretion, that is being preserved because they will not be degraded. But in case of GLP-1, you are giving exogenous injections of GLP-1 analogs. This is very important slides to understand. When you are giving DPP-4 or GLP-1 analogs, so how it works? I have already told that it increases the insulin production from beta cells, it suppresses the glucagon secretions, it suppresses the beta cell apoptosis, it decreases the gastric emptying time, and in case of any diabetic patient with CKD, it reduces the albumin secretions. The microalbuminuria is reduced, and it increases the uptake of glucose in the peripheral tissue, adipose tissue, muscles, fibers, and it is basically there's a lot of CV protection, and when we are combining these drugs, molecules which increases GLP-1, whether you are giving GLP analogs or DPP-4 inhibitors, they are wonderful molecules. This is omnious octet, means how the blood glucose is rising in your body. It is not only the beta cells, it is the peripheral muscle also, it is adipose tissue also, it is at the liver also, means at different sites. All 8 sites, which is known as omnious octet. This is to be blocked in case of diabetic management. SGLT2 inhibitors, they are canagliflozin, DAPA and EMPA, I have already told. Coming to the SGLT2 inhibitors. SGLT2 inhibitors, these are basically blocking the SGLT2 receptors. SGLT2 receptors, they are there in the proximal convoluted tubules, and SGLT1 receptors, they are in basically in small intestine also. So when there is a normal routine, 150 to 180 grams of glucose is being filtered in the kidney, and this filtered glucose is being reabsorbed by SGLT2 enzymes. So when you are blocking this SGLT2 enzyme, you are blocking the absorption of glucose. So when you are blocking the absorption of glucose, there will be passage of glucose in the urine. So 100 and 120 grams of glucose is being excreted from the urine. So there will be glycosuria. When you are giving the SGLT2 enzyme inhibitors, you will find even the normal blood glucose, you will find glycosuria in case of that patient taking SGLT2 inhibitors. So when 100 and 120 grams of glucose is being excreted from the kidney, there will be osmotodiuresis. There will be volume depletions, weight loss of 2.5 to 5 kg. There will be calorie loss. It decreases the blood pressure, decreases the RAS activation. So
when weight is reduced, there is a decreased CV mortality and evidence of strokes in MI is also reduced. Coming to the multifactorial approach to reduce diabetic complications. In the this 1926, at this point, we are not controlling blood glucose only. Just it is basically a take-home message. We have seen every alternate, even medical shops, they are having now glucometer. डायबिटिक का मतलब ब्लड ग्लूकोज अकेला चेक करके मेडिसिन देना नहीं है. My personal request is that blood glucose basically give you the parameter कि आपकी डायबिटीज कंट्रोल है, कि आपकी डायबिटीज लो है, कि आपकी डायबिटीज हाई है. इसके अलावा ब्लड ग्लूकोज कुछ भी नहीं करता. So when you are treating diabetes, you should not only control blood glucose, but you should control the patient weight. You should control the patient blood pressure. You should control the lipids. You should control that the patient should not develop any cardiovascular, renal, peripheral, cerebral complications. So when you are examining any patient of diabetes, there should be complete workout. Not only blood glucose, there should be complete workout. कई बार लोग पेशेंट पूछते हैं कि सर हमें तो डायबिटीज़ है, तुम जो एक्सरे का है वो करा रहे, ये ईसीजी क्यों करा रहे, आप आपको माइक्रो एल्बुमिनरी क्यों करा रहे, आप फंडस क्यों करा रहे. It is my personal request. Any patient of diabetes should be very properly investigated to measure blood glucose, at the same time to evaluate for any macrovascular and microvascular complication. अगली स्लाइड्स में बताऊंगा क्यों. Because when you are evaluating a patient properly, then only you can give the proper medication. This is a very good slide. That the patient, every patient of diabetes do not require primary medication like sulfonylureas, any glibenclamide, glyclazide, glimepiride, all they means these are the drug molecule to be to control blood glucose. But when the patient is having other complications, like if the patient having simple diabetes, no other complication, then you can give combinations of metformin plus sulfonylurea. It should be the drug of choice. It should be the drug of choice. But if the patient is having other complications, like if the patient is having a heart failure, you will not like to give glitazones. Pioglitazone is contraindicated. What are the molecules to be given in case of patient having cardiac problem with heart failure? SGLT2 inhibitors, they are the drug of choice. In case of cardiac failure, when we are doing echo, most of the people be accustomed with echocardiography. We are using, we are taking care of cardiac parameters first in diabetic patient, because the diabetic patient, they are more prone for coronary episodes. In spite of normal ECG, you can have diabetic cardiomyopathy. That is restricted type of cardiomyopathy, with you will find LV diastolic dysfunction. So in these type of situations, the patient can have cardiac failure without any positive evidence in the ECG. This can be depicted only when you are doing echocardiography. So any patients of diabetes with cardiac failure, the drug of choice is SGLT2 inhibitors. In case of heart failure without diabetes, you can give dapagliflozin and empagliflozin as a first line therapy. It is indicated now in the guidelines. It is class 1A indication to give dapagliflozin and empagliflozin in case of cardiac failure without diabetes. So without diabetes also you can give these molecules. If the patient has CKD, there is a very good trials which are DAPA CKD, EMPA CKD trials, which says that when you are using these molecules SGLT2, albuminuria is reduced, serum creatinine level settles down very fast. If the patient is having any high risk of atherosclerosis, coronary vascular disease, of course SGLT2, DPP4, they are the choice, apart from metformin. So if the patient is having MASLD, fatty liver diseases, glimepiride is not the drug. You give
metformin or imeglimin along with pioglitazone with SGLT2. SGLT2 is indicated now in case of even fatty liver also. ये हमारे कंपनी की स्लाइड्स हैं. There are some combinations of there are so many trials with combinations of the dapagliflozin, metformin and sitagliptin. These are multiple trials. They give conclude that there is a very nice control of fasting blood glucose, postprandial blood glucose and HbA1c level when we are combining these sitagliptin or vildagliptin or lenagliptin with metformin with dapagliflozin or empagliflozin. This is UD trial, FDC trial showing change in fasting and prandial glucose, at the same time change in HbA1c, remarkable reduction of HbA1c. This is Grace CVD, means the patient is having diabetes with CVD, coronary vascular disease, shows very good glycemic control. If we are giving these combinations, there is a good control of glycemia, at the same time controlling the weight and controlling the blood pressure. And in case of Grace CKD also, there is very normalized, proper normalization of blood glucose. At the same time, there is a CKD prevention also. These are more trials, advanced trials showing there is a weight loss also because of the SGLT2. There is a glycemia control, there is a HbA1c reduction control. So to summarize, the combination of DPP4 with SGLT2 with metformin, they not only control hyperglycemia, they prevent beta cell exhaustion, that is beta cell apoptosis, and they improve insulin resistance by proper utilization of glucose into the peripheral tissue like muscles and adipose tissue. They block the production of glucose from the liver, metformin. They control weight, they control blood pressure, and they control lipids. So in all, there is a very nice cardiorenal production, and they in all improves the patient metabolic profile. Thank you very much. कोशिश किया मैं क्लिनिकल दिया ज़्यादा पर वो नहीं है. Any question from house? इंसुलिन जो है अभी once in a week इंसुलिन अभी अवेलेबल है. इंसुलिन ग्लार्जिन और डेग्लूटेड we are already using once in a day, and combination of degludec aspart, that is we are by the name of Rhizodec, we are using once in a day or twice in a day, but once in a week is also available in the market now. Novo is manufacturing. It is to be given once in a week time. मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि it will be just like Glargine, because once in a week means you are taking care of basal glycemia. Just like Glargine or degludec, it will take care of basal requirement of the insulin, but कुछ मुझे लगता है कि प्राइंडियल कवरेज के लिए कुछ ना कुछ आइदर आपको रेपाग्लिनाइड देना पड़ेगा या वॉग्लिबोस देना पड़ेगा या शॉर्ट एक्टिंग कोई आपको सल्फेंडिल देना पड़ेंगे. ऐसा अभी बिकॉज आई एम नॉट हैविंग एनी एक्सपीरियंस ऑफ वंस इन ए वीक इंसुलिन, बट जिस हिसाब से जो इसका प्रेजेंटेशन आया है, इट विल टेक केयर ऑफ ओनली बेसल रिक्वायरमेंट ऑफ द इंसुलिन. प्राइंडियल कवरेज के लिए कुछ ना कुछ अपन को देना पड़ेगा. शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन भी बहुत अच्छे अवेलेबल है. एस्पार्ट, जितने भी जो एस्पार्ट है या अभी नया वाला जो है फियास्ट के नाम से आया है, फास्ट एक्टिंग एस्पार्ट है. इट्स वेरी शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन हैविंग एक्शन ऑफ ओनली 4 hours. तो मुझे लगता है प्राइंडियल कवरेज के लिए इसको देना पड़ेगा. सर ये जो डापाग्लिफ्लोजिन आप यूज करते हैं, स्पेशली जैसे कि रीनल बेनिफिट्स हैं उसके, लेकिन अगर हम यूरिन आरएम करते हैं जनरली बिफोर स्टार्टिंग डापाग्लिफ्लोजिन वी वांट टू रूल आउट यूटीआई, लेकिन मान लीजिए पेशेंट को रीनल डिजीज है और उसको हल्का फुल्का देखते हैं 4 to 5 plus cells, 8 plus cells, प्रोटीन यूरिया रीनल पेशेंट्स को मिल जाता है, तो उसको आप डिफरेंशिएट उस विजिट में कैसे करते हो कि यार ये अभी शुरू करूं या फिर वेट करें? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. आपको डापाग्लिफोजिन और एम्पाग्लिफोजिन देने के पहले आपको यूटीआई एक्सक्लूड करना बहुत ज़रूरी है. इन केस ऑफ यूटीआई ideally we don't advise to start dapagliflozin and empagliflozin because in case of dapa and empa there will be glycosuria. कई बार नॉर्मल पेशेंट्स को भी आप डापा एम्पा शुरू करते हो तो ग्लाइकोसूरिया के कारण यूटीआई होता है.
तो अगर पेशेंट को यूटीआई है और अपन डापा एम्पा देते हैं तो दे आर फेयर चांसेस ऑफ डेवलपिंग पायूरिया, सब टाइम आपको बढ़ जाएगा, इन्फेक्शन बढ़ जाएगा। तो इनिशियल स्टेज पे आपको अगर मान लो यूरिनरी अपन एग्जामिन करें और यूरिन में अगर आपको पस्टल्स मिल रहे हैं, पेशेंट असिम्प्टोमेटिक है, हम नहीं सस्पेक्ट कर रहे हैं। लेडीज पेशेंट में 80% पेशेंट्स एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, मैंने देखा है। इवन जेंट्स में भी 30% डायबिटिक पेशेंट में मैंने देखा यूटीआई एसिम्प्टोमेटिक है। व्हेन यू एग्जामिन यूरिन पस्टल्स वो पॉजिटिव आती है, पेशेंट को सिम्टम्स नहीं मिलते, तो उस केसेस में मेरे हिसाब से पस्टल्स में आप डापा एम्पा नहीं देना, आपको नहीं देना। ऐसे इशू आता है बीपीएच पेशेंट, सिम्प्टोमेटिक बीपीएच पेशेंट्स हैं, उनमें आपको कभी वो भी हाई रिस्क होते हैं बीपीएच पेशेंट में थोड़ा सा कॉशियसली देना, बिकॉज बीपीएच पेशेंट में यूरिनरी रिटेंशन होगा। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द पीवीआर, आपका पोस्ट वॉइड रेसिड्यू कितना है। अगर पोस्ट वॉइड रेसिड्यू है तो दे आर फेयर चांसेस ऑफ यूटीआई। पेशेंट आए सर विद सीवियर सेप्सिस, ये डापाक्लोफिजिन मैंने स्टार्ट किया बीपीएच वाले पेशेंट से, यूरिन आरएन करके मैंने मेरा ब्लड किया था यूटीआई, लेकिन फिर भी उनको सीवियर यूटीआई नहीं, अगर आपको पेशेंट के पास में आपका पीवीआर ज़्यादा है, पोस्ट वॉइड रेसिड्यू ज़्यादा है, तो जो है फेयर चांसेस ऑफ यूटीआई। तो उसमें पेशेंट में आपको डापा एम्पा ना दो तो अच्छा है, या उसका और दूसरे पेट में बीपीएच है सर। सिम्प्टोमेटिक रेसिड्यू कभी नहीं अपर यूटीआई में कन्वर्ट होता है, मतलब उससे कभी किडनी में इन्फेक्शन नहीं पहुंचता है, कभी ये लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होता है, कभी उसमें मतलब ऐसा नहीं होता है कि मरीज को थायराइड फीवर आ जाएगा या मरीज को मतलब किडनी में पस पड़ जाएगा या किडनी निकालनी पड़ेगी, ऐसा नहीं होता है। इट इज 99% ऑफ द टाइम इट इज ओनली वेरी लो यूटीआई इधर प्रिक्यूशन ऑफ अर्बन इन्फेक्शन, विच इज यूजुअली फंगल इन्फेक्शन। हम दवाई बंद करते हैं बिना एंटी फंगल के, जिस पेशेंट को एसजीएलटी इन्हिबिटर स्टार्ट करने में इंडिकेशन है, जैसे मान लीजिए सीएचएफ का पेशेंट है, सीकेडी का पेशेंट है, या किसी और कोई और को हार्ट इंडिकेशन है, रिकरेंट एसजीएलटी इन्हिबिटर इंड्यूस लोअर यूटीआई होने के बाद में भी उसकी यूटीआई ठीक करके उसको वापस इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ऐसा है, लिटरेचर में है। इफ द पेशेंट डेवलप्स यूटीआई, अब ये एक सिचुएशन आती है कि अगर पेशेंट डायबिटिक है, डापा या एम्पा वो ले रहा है और पेशेंट को यूटीआई है, ओके। अब हाउ टू प्रोसीड, मेरा हाउस से भी पूछना है कि ये अपन लोगों का बेसिकली क्लिनिकल डिस्कशंस होने चाहिए, तो दिस इज वेरी ए कॉमन कॉम्प्लिकेशन वी आर फेसिंग इन पेशेंट ऑफ डायबिटीज विद टेकिंग एम्पा और डापा। अगर पेशेंट को डापा एम्पा अगर ले रहे हो, पेशेंट को देखो फंगल इन्फेक्शन तो होगा, फंगल इन्फेक्शन होगा और यूटीआई भी होता है, यूटीआई भी होता है, पल्सेस आते हैं और जो अपन जैसे ही उसको अपन बंद कर देते हैं तो यूटीआई डिसअपियर हो जाता है। फंगल इन्फेक्शन में आप एंटी फंगल दो तो कवर हो जाता है। उसके बाद में आप चाहो तो अगर थोड़े दिन के बाद 2 या 3 हफ्ते बाद 4 हफ्ते बाद आप उसको फिर से रीस्टार्ट करके दे सकते हो लो डोज में। एंड जस्ट कीप ए विजिलेंट वॉच ऑन यूरिनरी पस्टल्स, कीप ए विजिलेंट वॉच ऑन यूरिनरी पस्टल्स। बढ़िया आपके पैथोलॉजिस्ट हैं, आपको देखें कि आपके उसमें पस्टल्स द्वारा रिएवियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर पेशेंट को यूटीआई एसिम्प्टोमेटिक है, मान लो एसिम्प्टोमेटिक कई बार मिलता है, बट आपके पस्टल्स ग्रेजुअली बढ़ते चले जा रहे हैं, मेरे हिसाब से तो उसको, मेरा पर्सनल व्यू ये है कि उसको SGLT2 बंद करना चाहिए। उसको सिम्टम नहीं है मान गए, मगर उसका अगर मान लो पीवीआर साला 100 ml 100 ml का पीवीआर हो रहा है, आप कितने ही प्रोस्टेट की मेडिकेशन दे दो, 100 ml का पीवीआर होगा, आज नहीं तो कल उसको यूटीआई हो जाएगा। आप उसको यूरिनरी पस्टल्स को एक वॉच करके रखना पड़ेगा। अगर आपका पस्टल्स आपके इंक्रीज नहीं हो रहे, आपके पेशेंट कंफर्टेबल है, तो आप जस्ट कंटिन्यू विद हाफ डोज ऐसा करके। बट आप बोलोगे यूटीआई नहीं होता है, मेरा डायबिटिक प्रैक्टिस का जो अनुमान है, मतलब 10, 25, 50 डायबिटिक पेशेंट रोज देखता हूँ मैं, तो मुझे लगता है कि यूटीआई तो मैंने देखा है बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा कॉमन है, फंगल इन्फेक्शन बहुत कॉमन है। प्रोडक्ट मोनोग्राफ तो ये कहता है सर कि नहीं देना यूटीआई के अपर यूटीआई नहीं होता, मतलब कोई इन्फेक्शन किडनी तक नहीं जा सकता। ये कहीं नहीं लिखा कि प्रॉपर सिस्टाइटिस का पेशेंट, आपका कहना ये है कि सिस्टाइटिस अगर होगी पेशेंट को, यूटीआई का मतलब है पेशाब में यूरिनरी बर्निंग मीन्स उसमें पस्टल्स आ रहे हैं, उसका मतलब है आपको इन्फेक्शन है। तो इन्फेक्शन है, चाहे वो यूटीआई में इन्फेक्शन हमारा सिस्टाइटिस होगा, तो सिस्टाइटिस का इन्फेक्शन के ऊपर क्रॉल करके ऊपर नहीं जाएगा। सर नहीं जाता, इसमें यही तो है, मतलब इसमें अपर यूटीआई नहीं होता है, SGLT2 इन्हिबिटर
पाइलोनेफ्राइटिस नहीं होता मतलब सीधा सीधा ये, बट यूटीआई तो होगा, यूटीआई होगा, पाइलोनेफ्राइटिस नहीं होगा, सिस्टाइटिस होगा। तो रिपीटेड सिस्टाइटिस भी होगा तो अपन को वॉच करके रखना पड़ेगा। यूरिनरी ब्लैडर की आप थिकनेस देखो, आपके पास बहुत अच्छे अच्छे सोनोलॉजिस्ट हैं आज की तारीख में, तो वो बेसिकली पीवीआर बहुत अच्छे से देख लेते हैं, आपकी इवन यूरिनरी ब्लैडर की वॉल थिकनेस को वो बता देते हैं कि सर देयर इज अ क्रॉनिक सिस्टाइटिस बिकॉज ऑफ द थिकनिंग ऑफ वॉल, थिकनिंग ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। हमारे बॉस बैठे हुए, आप बताएंगे आप क्या क्या पता चल जाता ना। नहीं, उसको फीवर नहीं होता है। पेशेंट को अगर प्लेन यूटीआई है, नॉन डायबिटिक, बात को भूल जाओ कि पेशेंट को डायबिटीज है, कार्डियक है। अगर पेशेंट का यूटीआई का डायग्नोसिस कैसे करते? बर्निंग इन मिक्चुरेशन, पेन ड्यूरिंग मिक्चुरेशन, फीवर, डिसयूरिया, ये यूटीआई के प्लेन सिम्टम्स है ना बेसिकली। इचिंग होता है नॉट बिकॉज ऑफ यूटीआई, इचिंग होता है बिकॉज ऑफ द फंगल इन्फेक्शन। हो सकता है, हो सकता है, बट मेरे हिसाब से इचिंग तो फंगस में होगी, यूटीआई में बर्न नहीं होगी। मतलब हो सकता है ये, मतलब हम लोग तो बंद कर देते हैं, पर्सनल ये हम लोग बंद कर देते हैं। हाँ, प्रोफेसर हेरवाल बोलना चाहे, देवेंद्र भाई। नहीं ऐसा थोड़ी, आपके एक्सपर्ट समझ लगे। जैसे कुछ स्टडी कहती है बता रहे हैं, तो एसजीएलटी टू इनहिबिटर अगर किसी पेशेंट को यूटीआई के सिम्टम्स आ रहे हैं, अगर फंगल इन्फेक्शन हो या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, उसको बंद करने के बाद हमें दोबारा नहीं चाहिए, क्योंकि मेन कॉज ग्लाइकोसूरिया ही है। तो हम उसको इंड्यूस बार बार कराएंगे तो उसको बार बार यूटीआई होगा और वो बाद में सेप्टिक तब उसका कॉज होगा। तो जनरल प्रैक्टिस में दोबारा एसजीएलटी इनहिबिटर स्टार्ट नहीं करना चाहिए अगर किसी खासकर फीमेल पेशेंट में अगर यूटीआई आ रहा है। थैंक यू सर। यस अनुराग, अरे बोलो यार। Sir, I think sir, the combination से I mean SGLT2 and DPP4 inhibitors का ये कुछ स्टडीज हुई हैं कि जहाँ पर SGLT2 के साथ DPP4 inhibitors लेते हैं, there are less chances of UTI. The mechanism of action is not we don't know, but the combination prevents the UTI from developing. अभी you are using this combination in UTI, no? सर डापा एंड DPP4 inhibitors के साथ में देने का के साथ जो इंसिडेंट होता है यूटीआई का, इट इज वेरी लेस इन कंपैरिजन ऑफ डापा एलोन। हेलो, इंसिडेंस कम हो जाता है। क्या सर ये नहीं पता, बट हाउस पीछे बैठे हुए कुछ लर्नेड हमारे हैं लोग यार, बताओ कुछ। हम लोग तो पुराने ट्रेडिशनल जमाने के डॉक्टर हैं यार, तुम लोग नए नए लोगों को कुछ एक्स्ट्रा कमेंट बताओ। थैंक यू। इफ देयर इज नो क्वेश्चन, थैंक यू। इसके अलावा चौथी दवाई कौन सी होती है और जब कंट्रोल नहीं होता है कौन सा क्वेश्चन? है? इस कॉम्बिनेशन के अलावा हाँ। फोर्थ ड्रग अनकंट्रोल्ड डायबिटीज में अभी मैं सेमाग्लुटाइड शुरू करती हूँ। अच्छा मतलब ओबीस पेशेंट है, सेमाग्लुटाइड मैंने शुरू किया है अभी, थोड़े से पेशेंट अभी हैं। कॉम्बिनेशन आ रहा है गिमीफ्राइड के साथ में, सबके साथ में। नहीं, अगर ये तो आपका बेसिकली नॉट, ये कंट्रोल करेगा आपका शुगर करेगा, बीपी करेगा, आपका वेट कंट्रोल करेगा, आपको सर्कुलर लीवर किसका रोका इसमें आपको सर्कुलर लीवर देने में किसी ने नहीं रोका। You can very well combine this molecule, this combination molecule with sulfonylurea, or you can combine this molecule with insulin. इंसुलिन बचता है यार, क्योंकि आपका बीटा सेल ऑलरेडी एग्जॉस्टेड है, तो आपको इंसुलिन स्टिमुलेटर नहीं है, बीटा सेल स्टिमुलेटर नहीं देना। फोर्थ ओरल ड्रग जो आप ऐड करोगे सर्कुलर लीवर से। छोड़ दीजिए। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much, sir. It's always a great session. Thank you so much, sir, for your flawless presentations. And it was a definitely a learning sessions for everyone. To conclude the sessions, first
I take this with the permission of our chairpersons and eminent speakers. I just request chairpersons to kindly sit there. I just to facilitate our chairpersons. So I request all our three chairpersons and speakers also, sir, please. Both our eminent speakers, kindly, sir, to facilitate the session, and we will conclude the session. Sir, please. Thank you, sir. It was a very learning treat for all of us. Thank you, Choda sir. Thank you, Dr. Pujan sir, for very academic sessions. Now it's take, sir, as we always practice sustainability, sir. So we also here sustainable practice we are doing. So I welcome our first chairperson, Dr. Devendra Edwa sir, with a plant. Thank you, sir. Now, it's my honor, I welcome our second chairperson, sir, Dr. Ayush Patel, sir, with a plan, sir. Thank you. Yes, sir, अपन करेंगे वो काम. Yes, sir, please. It's our honor, sir. Super specially group बना दिया है. उसका कुछ जाएगा. Now I welcome Dr. Piyush Jain, sir, with a plant. Thank you, sir. Now I honor and privilege to welcome our speaker for tonight, Dr. Rajan Chandra, sir. जो सबसे छोटा प्लांट लिया है मैंने. ये सबसे बड़ा ग्रुप है. इसको बढ़ाइए. ये सर क्या है पता नहीं. चलो बहुत थैंक यू. फोटो थैंक सर. एक बार सर एक जस्ट सर मोमेंट हुआ सर. थैंक यू सर. आया हुआ तुम दो डॉक्टर अनुराग जी प्लीज आइए. सर एक सेकंड प्लीज आइए. प्रियंक बोला तो बस आ गया. वो इतनी दूर से आए 60 किलोमीटर जोड़ी. सर आइए प्लीज सर. थैंक यू सर. सर 14 सर ये तुम्हारा फेवरेट है. सर आपका मोमेंटो सर के बीच में सर आई तो रिलीज हो गया. आपका मोमेंटो सर में सब ले लिए. Thank you, sir. Yes, sir. With the permission of sir, request sir, Devendra sir, kindly give the sir closing remarks. And then I will finish. बहुत शानदार है. बहुत अच्छी गैदरिंग. पूरे हमारे मेडिकल कॉलेज में सभी हमारे लोग आ गए. हमारे सीनियर प्रियंक सर भी आ गए. उनका पार्टिसिपेशन हमारा अच्छा. Thank you, sir. डॉक्टर भूपेंद्र भी आए. बड़ा बहुत अच्छा लगा. डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं. आनंद सिंह सर है. पीयूष का बहुत बढ़िया काम है. बहुत डॉक्टर संदीप है. डॉक्टर संदीप है. वेरी नाइस. इस तरह की गैदरिंग होती रहे. मुझे लगता है एकेडमिक प्लेटफॉर्म पे कुछ ना कुछ एक्टिविटी होती रहे. इस तरह से अच्छा लगेगा और लोगों में पार्टिसिपेशन भी साथ रहे तो बहुत अच्छा लगता है. और जितने ज़्यादा क्वेरीज होंगी दिमाग में उतना ज़्यादा सामने वाला बोलने के लिए इच्छुक रहता है. काम करने में पढ़ने पढ़ाने में इच्छुक रहता है. तो कोशिश करें कि इट शुड बी नॉट मोनोलैटरल. इट शुड बी बायलैटरल डायलॉग. तो उसमें एकेडमिक्स की जो है इम्पोर्टेंस और बढ़ जाती है. तो मेरा सोचना ये है कि अगर इस तरह की एक्टिविटीज होती हैं, एकेडमिक प्लेटफॉर्म पर एक्टिविटी होती हैं, देन इट शुड बी कोई इस तरह का लेक्चर नहीं. मैं कोई ऐसा नहीं हूँ बहुत ज़्यादा कुछ
हम लोग पढ़ते हैं। हम लोग क्लिनिकल बेस्ड बात करते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा वो चीज़ नहीं है, बट मैं कोशिश करता हूँ कि हमारे जो जूनियर्स हैं उनसे एक ऐसा इंटरेक्शन तैयार करो, एक ऐसा कनेक्टिविटी तैयार करो कि आपका क्या प्रॉब्लम आ जाता है वो आप भी पूछो, हमें क्या प्रॉब्लम आता है हम आपसे बताएं। और बायलेटरल में काफ़ी इम्प्रूवमेंट भी होता है, लोग पढ़ के आए, हम लोग भी उसको पढ़ लगता है कुछ ऐसे क्वेश्चन अगर मार्क इसमें प्लेटफॉर्म पर मार्क अपलोड होते तो खुद को भी अच्छा लगता है कि हाँ कुछ नई नई चीज़ें सीखने को मिली। तो ये बेसिकली इट्स ए कॉन्स्टेंटली लर्निंग प्रोसेस द CME। तो हमें भी सीखने मिलता है, आप लोगों को भी सीखने मिलता है, आप लोगों में बहुत अच्छा। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much, sir. Thank you so much.